All right. Hello, everyone. This is Let's Connect, and I am Rishara Ganguly. Today, we are in conversation with Gagan Anand from one of the episodes that make up ALTBalaji's series, Hai Taubba, that released on 6th of May. So, thank you for joining me in this interview, and I hope you and your family are safe in this pandemic. Yes, How is this yes, sir. treating you? And yeah. It's the same everywhere for us. It is the same. Everything is shut. We all are at home only, keeping ourselves safe. So सब लोग घर पे ही हैं. I hope आप लोग सब भी safe रह रहे होंगे. Yes, yes, everyone is safe. हम लोग भी सब safe है. And it's just sad that what's happening outside and well, Exactly. Yeah. situations can't be helped that much. But Correct. first off, tell me something about Hai Tauba and your character in the series. Hai Toba is a new show on Alt जिसमें 4 एपिसोड्स हैं और ऑल द एपिसोड्स जिसमें हम लोगों ने एक सोशल मैसेज देने का ट्राई किया है मेकर्स ने. And in my episode, it's about a same gender relationship जिसमें मैं नितिन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट इन दैट. और मैं एक कैब ड्राइवर जो मुझे अपनी कैब से मेरे थेरेपी सेंटर पे छोड़ने जाता है उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता हूँ और हम लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं. हमारी एक अनसेट सी केमिस्ट्री है जो कि धीरे 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 हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं. देन लेटर ऑन इन द स्टोरी मुझे पता चलता है कि दिस अमित गाय इज ऑलरेडी एंगेज और किसी से शादी होने वाली है उसकी. और देन आई लीव हिम कि ताकि वो खुश रहे अपने रिलेशनशिप में. दैट्स अबाउट द स्टोरी जो कि वो शॉर्टकट में मैंने आपको बताया है. एंड इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी जिसमें आप रिलेशनशिप में आते हैं और आपको एक इस रीजन से किसी को छोड़ना है कि द अदर पर्सन स्टेज हैप्पी इन हिज फ्यूचर लाइफ. तो बहुत इमोशनली उसको दिखाया है स्टोरी में. Right. And I'm sure that it must have been very challenging for you to play this role It was, yeah. because playing a character who is a part of the LGBTQIA plus community has Correct. responsibility of correct, representation. So do you think your character in the episode, it justifies that representation? Justification I can't say anything that my viewers will the viewers of the show will say talk about it. But I think मैंने इसी intention से I took the show कि मेरे ये वाला शो मेरे बाकी के प्रीवियस शो से थोड़ा अलग है और इसमें मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कैरेक्टर करना है. सेम जेंडर एंड ऑल एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है हमें ऐसे जब हम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ऐसे शोज करते हैं. तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट मैंने इसलिए लिया था ये शो कि हम लोग अपने ऑडियंस को या व्यूवर्स को जरूर कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचा सकेंगे उसके थ्रू. Right, right. So what was the kind of character brief that you were given? Because I mean, as you said, it's a very challenging role and you have to kind of tiptoe around it and you have to be careful with what you show. So how did you discuss your character dynamics with the director and also with your co-actor who plays Amit? Because you share an intimate screen space with him. So what was the character brief that you were given and what were the character dynamics that you discussed? I'll tell you from the start when I reached on the set on the very first day. तो मेरे लिए थोड़ा different भी था और difficult भी था कि this kind of character is really very different. For me, जनरल लाइफ में हम लोग ऐसे बात नहीं करते या फिर ऐसे किसी लड़की के साथ भी इतनी जल्दी से रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट हो जाता आप लोगों का. Right, right. मेंटली आपको डोज चाहिए होती है जो कि हमारे डायरेक्टर ने हमें दी. हम लोगों को साथ में बिठाया हमें रीडिंग्स करवाई और फिर ब्रीफ दिया कि मेनली विल जस्ट हैव टू प्ले ऑन द इमोशन. आपको कुछ लाउड नहीं करना कुछ ज्यादा बोल के नहीं बताना सिर्फ एक दूसरे के अगर आंखों में भी देखेंगे चाहे वो लड़का लड़की हो या लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो एनी जेंडर आप अगर आंखों में देख के वो दिल से अगर वो बात सिर्फ बोल देंगे तो आपका मैसेज कन्वे हो जाता है सामने वाले को. तो दिस इज हाउ शी कन्विंस्ड अस कि आप इस तरह से प्ले करोगे तो आपका इमोशन पोर्ट्रे हो जाएगा. और कुछ म्यूजिक बीट्स हैं हमारे कुछ हमने ऐसे थीम्स बनाए हैं जिससे लोग उससे कनेक्ट करेंगे. तो हमने जैसे जैसे हमारे डायरेक्टर ने कहा हम वैसा वैसा प्ले करते गए और इट्स नाउ ऑन एयर सो द ऑडियंस कैन टेल अस बेटर कि हमने क्या किया.
Well, I'm pretty sure that everyone loved watching you on screen, and Yes. because you've received good criticism, and looking at how you play a character from a community who is marginalized even today in 2021, which is Right. quite Right. shocking and surprising. What is your opinion on the importance of such a story on Hai Taubba? See, if we'll talk about the community, सोशल मीडिया या फिर लोग कितने भी एडवांस हो जाएं, इसको कुछ लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं और कुछ लोग नहीं करने वाले हैं. ये जो टॉपिक है नेवर एंडिंग, मतलब इस पे डिबेट कर ही नहीं सकते. धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं, बट अभी भी 100% लोग एक्सेप्ट नहीं करते. सो हमने वही दिखाया है इसमें. इवन जो हम एक दादी, अमित की दादी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका एक डायलॉग है कि स्टार्टिंग में जब भी कोई गोवा में गे टूरिस्ट आता था तो हम लोग उसका मजाक बनाते थे, एंड लेटर ऑन उसको पता चलता है कि उसका अपना पोता ही सेम जेंडर को पसंद करता है, वो भी खुद भी गे है. तो इन द एंड शी इज सेइंग कि अभी हम लोग मजाक नहीं उड़ाते, अभी हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. तो वही मैसेज कन्वे किया गया है स्टोरी के थ्रू कि यार लोग तो सब सेम है. चाहे वो हमारा, अगर हमारे रिलेशनशिप में अगर कोई है, अगर वो ऐसा कुछ करता है तो हम उससे इमोशनली कनेक्ट होकर हम बोलते हैं नहीं यार ऐसे लोग होते हैं. और अगर कोई बाहर का होता है तो हम लोग कहते हैं ओ माय गॉड, हाय तौबा. जो कि हमारे शो का नाम है. तो लोग ऐसे बात करते हैं. तो वही हमने मैसेज कन्वे करने का ट्राई किया है कि इट हैपेंस, इट्स नॉर्मल थिंग. इमोशंस किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं. तो Yeah. वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन. दिस Yes. इज अबाउट माय एपिसोड. Yes, and that's a very important message that you are sending out to the audience, and to an audience who is uh, right now, who are very much open to these kind of subjects being talked about, being discussed, and being Right. the table of conversation. And it's a very, I mean, it's a progressive move forward to see web series who are taking up such subjects, who are taking up such topics and discussing them so openly and so beautifully and smoothly. But what I wanted to talk to you about was sex and eroticism is an oversaturated concept nowadays, you know, looking at web series especially. So would you say Hai Tauba kind of maybe, you know, leans into that overhyped sort of trend? It's not, these four stories are not about sex. जैसे कि कुछ पहले भी shows आ चुके हैं जो कि लोगों ने हम कंपेयर भी करना चाहा. जैसे कि हम लोगों ने कमेंट्स भी पढ़े कि गंदी बात का नेक्स्ट सीजन है एंड ऑल, बट वो एक अलग ही फील का शो है. उसमें उसमें भी दिखाते हैं कुछ चीजें, बट उसमें भी एक सोशल मैसेज होता है, बट दिस इज डिफरेंट. Right. इसको पहले से जब प्लानिंग किया गया था तो यही प्लान किया था कि अगर आप चाहे सेम जेंडर करें या फिर एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है या फिर एक और येलो एक स्टोरी है, उसमें जो भी हम दिखाएंगे उसमें एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए. चाहे हम उसमें सेक्सुअल कुछ चीजें दिखाएं या नहीं दिखाएं, बट इमोशंस पोर्ट्रे होना चाहिए ताकि लोग उससे इमोशनली कनेक्ट करें. तो इसका सेलिंग पॉइंट इस शो का सेक्स नहीं है. जो कि मैंने खुद भी देखने के बाद फील किया है. इट्स अबाउट इमोशंस मोस्टली. Oh, well, that's a good point of view that it actually leans into emotions and not really into sex. But and there's nothing really that wrong with portraying sex or showing sex on web series, but it also should be handled responsibly, which I think Hai Tauba does to a certain limit. And so you kind of answered my next question, which I want to ask you, that many, you know, criticisms pointing out to the similarities between Gandhi Baat and Hai Tauba. So what would you like to say to them? See, अगर हम सेक्सुअल सीन इसमें डाल भी देते तो भी लोग क्रिटिसाइज करते, अभी भी करेंगे. और जिसको पसंद आएगा वो वैसे भी करेंगे. लोगों का काम तो आई थिंक मैंने कहीं तो इसी सीरीज में या इसके पहले किसी सीरीज में सुना था कि लोगों का काम है कहना, वो तो वैसे भी बातें बनाएंगे. चाहे उसमें सेक्स डालो या आप उसमें इमोशन डालो, अगर आपने कोई भी सेंसिटिव सा टॉपिक उठा दिया तो कुछ लोग कम्युनिटी में बातें करते ही हैं. तो आप कैसा भी कंटेंट बनाओ, आजकल वेब पे इतने सारे कंटेंट आ गए हैं, लोगों के लिए ऑप्शंस हैं.
तो उनको वैसे भी आजकल कोविड के टाइम पे लोग फ्री हैं, तो उनको टॉपिक्स चाहिए होते हैं ऐसी बातें करने के लिए। तब कुछ भी बनाओ आप, उनको बातें ही करनी है। तो हम लोगों ने अपना अलग तरीके से ट्राई किया, जो हमारा ब्रीफ था एक्टर्स का कि इमोशंस पे प्ले करना है हमें। तो क्रिटिसाइज वैसे भी करते हैं लोग, बट इस शो के लिए अभी तक मुझे जो भी कमेंट्स या मैसेज इनबॉक्स इंस्टा पे या ट्विटर पे आ रहे हैं, उसमें काफी लोगों ने यही बोला है कि इट्स ए ग्रेट स्टेप, आपने एलजीबीटी को सपोर्ट किया है ऐसा कैरेक्टर प्ले करके। तो Right. जो कि अच्छा लगता है एज एन एक्टर, आपको अगर कोई ऐसा बोलता है तो। Yes, absolutely, absolutely. I congratulate you on this series, because it is a very, as I said, it's a very progressive step towards representation and towards discussing stories that need to be discussed right now, and that needs to that needs to come out into the open. And it's way too long that we've been trapped into the closet. It's time to come out. Yeah. And thank you राइट, so एक्चुअली much. आई वुड लाइक टू ऐड दीज थिंग्स कि हमारे इंडिया में अभी भी जरूरत है बेसिक एजुकेशन में ये सब चीजें सिखाने की। इवन ऑन दीज टॉपिक्स, एलजीबीटी हो गया, या फिर अबाउट गर्ल्स, इवन बच्चों को पीरियड्स के बारे में भी थोड़ा सा हेजिटेशन होती है बोलने के लिए। एजुकेशन की जरूरत है अभी भी हमारी सोसाइटी में। सो इट्स ग्रेट स्टेप फ्रॉम द क्रिएटिव्स एंड द चैनल। Yes, Yeah. you're absolutely right. This needs to be inculcated into the education system. Right. LGBTQI community are people, and they exist, and their identities are as important as anyone else. Yes. So thank you for joining me in this interview. I loved having this conversation with you, and Thank you so much. I congratulate you on Hai Taubba and the series' success on Thank ALTBalaji. you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.